Is Evangelion still peak in 2026? Well, my answer is yes. ये series मेरे लिए समय के अंत तक peak रहेगी. You might hate it or like it, but in this video, I am going to be selling you the series, telling you why you should watch it. What does Evangelion have to offer you? Well, it comes with relatable teen problems like daddy and mommy issues, a lot of daddy and mommy issues. It also talks about dark topics like existentialism, kids becoming part of war, hurting the people they love, having a traumatic life. I can't be the second child anymore. I have no reason left to live. Nobody cares about me anymore. My father, my mother, nobody cares. Having such a big responsibility at a young age just takes a toll on their life. And arguably one of the best anime intros ever. Who the fuck is recording me? Me, I mean you, For what? for content. Content, yeah. तेरे कितने views आते हैं? Man, just get out of here. Moving on with the video. The lore of Evangelion is biblically inspired from angels like Raphael, that's a name of an angel, and Adam and Lilith, but it's quite different. That there are just similar names. Well, what got me to watch the show? It was the amazing character designs. Eva जो मतलब एक boxy robot नहीं लग रहा है. It looks like a robot with human-like features, almost like a monster. And the characters in it are so iconic. तुम मुझे बताओ आस्का से बेटर सिंदरे कोई रिप्रेजेंटेशन है एनिमे में? आई डोंट थिंक सो. सिंदरे का मतलब ऐसा होता है कि एक लड़की जो हार्ड टू प्ले गेट करती है. देयर आर दीज stereotypical titles in anime की अगर कोई tsundere है तो they will act like this. There is also yandere, there is dere dere, a lot. So where were we? Well, what else does Evangelion have to offer other than the dark story, the lore, and the iconic designs? Hot anime women. And a guy. Just a guy who owns everybody. Even the kids. Well, the kids didn't want him, except Asuka. She was really into him. Well, what else do you expect from a 14-year-old girl who fall in love with her sensei? It's quite standard. This show has its fair share of weird or borderline problematic moments. Well, I think it's only the 10% और बाकी का 90% just forces you to think a lot. इस show को देखने के बाद I don't think you would want to watch anything else except to just think about the show and what happened and what the fuck you just watched. It is just a ramification of a lot of weird, controversial, lore deep, human psyche topics. And if you are into any of that or you just like the visual aspect of the show, you should watch it, in my opinion. Overall, this show will make you feel things, good or bad. शायद तुम्हें इसको देख के उल्टी ही आए, but this just shows how much the show has touched you. The show is like watching a movie when you are a kid. You don't understand things, but you just watch it for fun. क्योंकि इसको देखने के बाद तुम्हें कुछ समझ में तो नहीं आएगा, but you will just feel things after watching it. इस शो में बस वो सब चीज़ें हैं जो मेकर था हिदेकी आनो, मेकर है, ही इज़ अलाइव. हिदेकी आनो को जो चीज़ें पसंद आई थी वो सब हैं इसमें, because he wrote the show when he was in depression of 4 years. Now I'll tell you how to watch the show. First you have to watch the 23 episode series on Netflix. उसके बाद जो उसकी एंडिंग है, मतलब 23 एपिसोड वाली सीरीज की, वो बहुत घटिया सी एंडिंग है. मतलब तुम्हारे लिए एंड में बस सब लोग ऐसे रिदमिकली ताली बजा रहे होते हैं कि कंग्रेचुलेशन यू सैट थ्रू द होल शो. उसकी जो एंडिंग थी ऑफ कोर्स लोगों को पसंद नहीं आई. तो फिर 2 साल के बाद 1997 में इसकी एक मूवी आई, द एंड ऑफ इवेंगेलियन. यस, आई थिंक दैट वाज द नेम. तो जो मूवी थी उसमें एक प्रॉपर एंडिंग थी. ऑफ कोर्स इट वाज स्टिल ओपन एंडेड, बट इट वाज बेटर. थोड़ा बहुत मतलब तुम्हें एज अ व्यूअर सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे देख के. आफ्टर दिस द ओरिजिनल इवेंगेलियन वाज ओवर. नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन वाज ओवर नाउ. बट in 2007 they developed a loop theory की मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, it's in a loop और हर loop different है with a single character being an anchor who knows कि ये एक loop है. तो फिर 2007 में पहली मूवी आई इवेंगेलियन की रीबूट की. तो फिर ऐसे ही करके इसके 3 सीक्वल्स और आए और जिनमें स्टोरीज थोड़ी बहुत चेंज होती रही एंड इट हैड अ डिफरेंट आउटकम टू इवेंगेलियन. आई पर्सनली प्रेफर द रीबूट वाली एंडिंग
more than the original ending. तो और जो रीबूट था उसमें थोड़ी थोड़ी लॉर हर चीज़ से उठाई हुई थी, लाइक मांगा से, डीवीडी सीरीज जो थी, गेम बॉय, निंटेंडो 64, विंडोज 7, हर चीज़ से उठाई हुई थी. पर्सनली अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसको चीज़ों की तह तक जाना अच्छा लगता है तो यू विल नॉट मेक अ क्रैक इनटू दिस, क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल है. यू विल कीप वॉचिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड get more confused. So just watch the original series movie and the full movie if you want to, and that's the Evangelion experience I would recommend. I hope you have fun watching the series. And by the way, I forgot to mention, it has Yuri and Yaoi. Of course there are no Yaoi kissing scenes in the anime or the movies, but they are in the manga. I researched. Watch the series, enjoy the characters in it, have fun making sense out of it, and yes, this is the end of the video. I hope तुम्हें series पसंद आएगा. अगर तुमने नहीं देखी है, तुम देखने जा रहे हो, and comment down below if you want me to talk about more Evangelion, because मैं नल्ला बैठा हूँ और मैं Evangelion के बारे में जितनी चाहे उतनी बात कर सकता हूँ. I can make a lot of videos on it. By the way, my favorite two characters from the series were रे एंड कावोरू ही था, एंड रे का कैरेक्टर डेवलपमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. Like, share, subscribe, and